Assalamu alaikum students. Today we have an important discussion on political structure of Vijaynagar kingdom. So far we have studied about their beginning, their climax and disintegration. Then in the meanwhile we were also studied about the prospects, about the contributions, be it politically, be it administratively, or be it culturally, that Krishna Deva Raya, the greatest of all the Vijayanagar rulers, made to the South India in particular and India in general. ठीक. Then we did not discuss the structure of Bahmanis or the role of Firoz Shah Bahman or Muhammad Gawan as such as of now. That has to be studied in a separate lecture. Then we decided to study about various aspects of Vijayanagar Empire. They have to be understood. It was only in 2021 when a question was asked about the social structure of the Vijayanagar Empire. This makes it very imperative, this makes it very important for us to understand these aspects. Since we have to understand this Vijayanagar Empire on multiple aspects, but we'll be starting with political structure. That too with the political theory or political state there existed during Vijayanagar Empire. It may feel that we are deviating from the topic, but believe me, a proper understanding of the subject at once is very important. This will help you to come across, this will help you further to develop an understanding about the subject, and while you understand the subject in particular, your ability to answer question enhances at a faster pace. That enhances arguments. It's like an augmentation of your understanding. When we will in the later half of our this curriculum, when we will start with MCQ series, you will see a lot of questions from these lectures only, and they will be that MCQ series will cater to the needs of your UPSC or JKPSC preparation as such. Without wasting further time, I will straightforward go to the topic and have a slight discussion on the topic as a whole. Name of the topic is various aspects Vijayanagar Empire. Among the various aspects, the first thing we'll deal with is the first aspect that we'll deal is polity and governance. And in this topic, polity, and in this subtopic or subheading of polity and governance, we'll be studying various features. Then what are those features? Let me enlist first those features, then we'll deliberate, we'll discuss those features. ठीक है? Assalamualaikum. Honestly, it's a class on this. Can you discuss? So, first thing is
model. Historians have discussed the model of political model of Vijaynagar Empire at length at breadth. Some have spoken or some have given a model that is known as segmentary state model. Others said no, this was not a segmentary state model, rather it was a feudal setup. Some said no, quoting some historians, quoting their own reasons, said no, this was not a feudal model, rather it was a more of a centralized model. Let me put all the three aspects and analyze on these aspects. Why this question was asked. And believe me, this is not a question that will be asked to you in your mains or preliminary examination. But why historians quote what they refer to that it was a segmented state model or a centralized state model, that is important. Because we add information about Nayaks, we get information about Amaram, and that can be asked a question in your UPSC preliminary examination, not a model itself. That's why I am trying to make you understand each and every aspect in detail, because you never know from where UPSC can ask you a question. ठीक? Segmentary state, feudal setup, or centralized. ठीक? Segmented state, who was referred to? Who did it refer to? Bertenstein. Feudal setup किसने कहा था? Historian like R.S. Sharma, D.N. Jha, जिसकी आप बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है? और सेंट्रलाइज्ड किंगडम किसने कहा था? नीलकंठ शास्त्री, एरिस्टोटल और सारों ने, मगर ठीक है, आप एक नोट कीजिए हिस्टोरियंस. तो अब हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा. अब हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों कहा गया. बर्टनस्टेन की जो एक्सप्लेनेशन थी, जिस बर्टनस्टेन ने जो ये एक्सप्लेनेशन दी थी ना, हाँ, ये इस बेसिस पे दी गई थी, बिकॉज ही सेड that it was king was the head of the state, but he did not wield all the power. He did not wield all the power. ये आप याद रखेंगे. मैं क्या बोल रहा हूँ आपके लिए लिखना जरूरी नहीं है, बिकॉज आपको, चूंकि आप हिस्ट्री ऑप्शनल से स्टूडेंट नहीं है, तो आपके लिए लिखना नहीं है. जो आपके लिए लिखना इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर खुद आपको लिखाऊंगा, ठीक है? Since king did not wield the whole power, rather we focus of Vijaynagar political and economic segments were Nayaks. क्यों कहा था इसने कहा था जो फोकस है, देखो इसने बोला कि नहीं, किंग तो है, अथॉरिटी है, मगर सारी पावर उसके पास
नहीं है। क्यों? क्योंकि विजयनगर एम्पायर में जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेगमेंट्स का फोकस किस पे है? फोकस ऑफ विजयनगर political and economic segments were नायक। चूंकि यहां नायक्स का जिक्र है इसलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट दिया, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है नायक्स कौन थे, इनका क्या पावर था, ये क्या करते थे, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाया। अदरवाइज आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं था। बर्टनस्टेन का कहना था ये जो नायक्स है ये गवर्नमेंट को it was very difficult sometimes to control these nayakas. When for a king or a central government it's difficult to control these elements, should we say that it's a centralized empire? No. We'll say yes, we have a central state of model, but the power was not completely in the hands of the central empire or the central authority. Rather, it was wielded or it was shared by various very important officers who were known as nayakas. They sometimes became so powerful that they asserted their independence when Vijaynagar rulers were suffering from internal crisis. When they were suffering from internal crisis, like after the death of Devaraya II or after the death of this Krishna Devaraya, when there was internal distress, in a political distress in empire, they used to assert their independence. Means here Nayakas were the important figure. Now we shall have a slight discussion upon these Nayakas. We get this information about Nayakas, ये सिर्फ हमें literary source से नहीं मिलती, rather we get the information about Nayakas from various foreign travelers such as Nunes, Domingo Pace, and also from epigraphic records, means from inscriptions. ठीक? Now let's study something about these Nayakas. यहाँ मैं लिखूं आप लिखिए इनके ऊपर। They were military chiefs or warriors. ठीक, also known as Amar Nayaka or polygons. ठीक? Now, why do they become important? They were ceded a territory with a fixed revenue. Territory with fixed revenue. और इस टेरिटरी का नाम क्या था जो आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इस टेरिटरी को कहा जाता था और एक नाम जिसका नाम था अमारम। क्या कहते थे इसको? और ये जो ये अमारम था
It acted like as a military cantonment. यहाँ ट्रेनिंग वेनिंग करते थे. क्यों? ये जो मिलिट्री चीफ्स थे ना, ये सोल्जर्स को तैयार करते थे. ये मीन्स ये सोल्जर्स को यहाँ ट्रेन करते थे. बिकॉज इन द टाइम्स ऑफ वॉर दे यूज टू सप्लाई सोल्जर्स टू किंग. ठीक है. और ये अमरम एक रेवेन्यू टेरिटरी के साथ साथ एक मिलिट्री कैंटोनमेंट का भी काम देता था. ये आप याद रखिए. ठीक. और इसको इनको ये अमरम क्यों दिया जाता था, टेरिटरी क्यों दी जाती थी? बिकॉज दे हैड टू मेंटेन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ फुट सोल्जर्स, हॉर्सेस, एलिफेंट्स फॉर सर्विसेज ऑफ स्टेट. हाँ. ठीक. और क्या ये सारा जो रेवेन्यू इस टेरिटरी से आता था सारा खुद को पकड़ते थे? नहीं. दे हैड टू पे सर्टेन अमाउंट टू स्टेट एक्सचेकर. हाँ. ये देखो, ये आपको हर एक स्टेटमेंट आपके पास क्वेश्चन के ऑप्शंस हो सकते हैं. हाँ. तो ये आपके लिए फिर आंसर. हाँ. एक्सचेकर मीन्स ट्रेजरी. ठीक. Now comes very important question. You should have asked me a question, sir. Don't they look like muktis? Muktis used to do the same thing, almost same thing in times of Delhi Sultanate. Then, what is the difference? They didn't live there and they were transferred. Two important differences. One, which we'll write. Second, you will say me from there and right now. ठीक है. They were obliged. They were obliged to be present in royal headquarters. Therefore, they used to assign their tasks of revenue assessment or revenue collection to various agents, also known as Karya. Huh? Karyakartas. Know that. You know that term, agent. Agent का दूसरा नाम हिंदी में क्या कहते हैं? कार्यकर्ता. ठीक. Now, let us discuss about the differences between. So far, we have not studied about Jagirdars, but we know about Muktis. Where do you see the difference, Mukti and this Paligar? Assistants, right? Huh? Assistants. I said they were military chiefs. First statement. Karya. Agents. Yes.
बताइए मुझे, इम्पोर्टेंट है इसलिए इस पे ज़्यादा जोर है, क्योंकि अब यूपीएससी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो इन कंपैरिजन पूछता है हमेशा। तो कंपैरिजन आप मेहरबानी करके पहले से ही वो बुक पे डायरेक्टली नहीं लिखा होगा, वो कंपैरिजन आपको सोच विचार करना है। First thing, they have a definite role. Military chiefs. Huh? Did Muktis only had a military function? That was assigned to various nobles. They did not have a definite role, military role. Though they used to maintain various troops and did the revenue collection, but here we have a definite role, military chiefs. Primary role is this and secondary role is something else. ठीक? Now, were Muktis obliged to remain in headquarters, or they could be present in their areas which they were assigned? Huh? They had to be present in those areas which they were assigned to carry out the functions themselves. ठीक? यहाँ obliged मेन डिफरेंस ये है कि ये इनको हेड क्वार्टर्स में रहना था, हाँ, वो अपनी जगह रह सकते थे। ठीक? तीसरी डिफरेंस पे अगर हम गौर करें, बिकॉज कंपैरिजन करना आपका काम है, तो क्योंकि कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आता है। हु इज मोर पावरफुल, मुक्ति और दीज मिलिट्री चीफ्स, नायकास? They are more powerful than Muktis, aren't they? ठीक, इसकी वजह से स्टेट मॉडल ही चेंज हो गया। हाँ, चौथी डिफरेंस अगर आपको कोई मिली, एकता सिस्टम और मुक्ति पॉलीगार सिस्टम को आप एक और बार पढ़ेंगे खुद, जितनी भी आपको डिफरेंस है आप मुझे कल बता दें, ठीक है? हाँ, अब हम थोड़ा अब आए समझ क्यों बर्टन स्ट्रीट ने सेंट्रल, क्योंकि वो बोलता था कि ज्यादा जो एक्चुअल पावर सेंटर्स थे वो नायकास थे। ठीक? मीन्स दिस एम्पायर ऑफ विजयनगर एम्पायर, दिस वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस प्रोविंसेस, एंड ये प्रोविंसेस में जो पावरफुल एजेंट्स थे वो कौन थे? Nayakas. Actual power means empire was not completely centralized, rather it was in a fragmented or a segmented way where Nayaks used to control these segments. ठीक? अब centralized authority की किसने बात की? नीलकंठ शास्त्री ने। आप करूँ मैं? समझ आया? ये मैं आपको कोई नहीं आपको ये चीज़ पढ़ाएगा, चाहे आप किसी भी कोचिंग सेंटर में हो जो जीएस के लिए हिस्ट्री पढ़ाते हो, मगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज यूपीएससी नई टेरिटरीज को टच कर रहा है, नए काउंट्रीज पे जा रहा है, तो आपको अब जो भी सब्जेक्ट है वो अच्छे से पढ़ना ही होगा। सेंट्रलाइज्ड किंगडम, इस पे हमने काफ़ी गौर फिक्र किया है। कृष्णा देवराया के टाइम्स हमें ये पता थी कि जो सेंट्रलाइज्ड किंगडम है उसमें एक अथॉरिटेटिव फिगर होती है, और विजयनगर एम्पायर में वो हमें अथॉरिटेटिव फिगर जो ऑलमोस्ट एक्ट कर रही थी एज एन एब्सोल्यूट मोनार्क, कौन थी? कृष्णा देवराया। यू नो, दे हैव अ गुड नंबर ऑफ सोल्जर्स, मीन्स उनकी जो स्टैंडिंग आर्मी है वो काफ़ी नंबर पे होती थी एंड इन अ गुड कंडीशन। सेंट्रलाइज्ड एम्पायर में ये खासियतें होती है, और वो हमने कृष्णदेवराय के वक्त देखी थी। ठीक है? अब फ्यूडल सेटअप की क्यों बात की थी? फ्यूडल सेटअप की इसलिए बात की थी कि जो
फ्यूडलिज्म फ्रॉम बिलो होता है, ठीक है, उसमें सेंट्रल में एक अथॉरिटी ज्यादा रोल करती है प्ले, हाँ, rather than a main king and at lower rung the peasantry. तो उन्होंने भी यही एक्सप्लेनेशन दी थी कि जो फ्यूडल सेटअप वाले जो थेरिस्ट है, हिस्टोरियन है, उनने बोला कि नायका वालों के पास बहुत, एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास उतना पावर नहीं था जितना इंटरमीडिएट अथॉरिटी के पास पावर था, इसलिए इसको हम फ्यूडल सेटअप करें। मगर वो रिव्यू पॉइंट भी काफ़ी हद तक सही नहीं है, बिकॉज फिर सारा ज़मीन जो ओनर ऑफ द सॉइल होना चाहिए, ओनर ऑफ द लैंड होना चाहिए, वो तो सेंट्रल अथॉरिटी होना चाहिए। मगर हमें हर जगह पता है कि ओनर ऑफ द सॉइल, ओनर ऑफ द लैंड किंग ही हुआ करता था। किंग यूज्ड टू सीड टेरिटरीज, ठीक है। और जो फीफिस काम करते थे यूरोपियन में, और जो 14th सेंचुरी के आसपास जब फ्यूडलिज्म वहाँ था, that was completely different how Nayaks and central authority used to work, ठीक है, हाँ। So this is all about the state model, समझ आया? Now let us discuss model भी हो गया, मॉडल हो गया। How do you differentiate between segmented scale and feudal system? Are they kind of same? फ्यूडल सिस्टम पे ज्यादातर फोकस होता है लैंड पे, लैंड किसके अंडर होता है, जो फीप्स और फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स यूज्ड टू कंट्रोल द लैंड। यहाँ सिर्फ लैंड की ही बात नहीं हो रही, लैंड का कंट्रोल किसके पास है, किंग के पास, बिकॉज ही इज द ओनर ऑफ द किंग, वो वहाँ अथॉरिटी, वो फिर, और वो नाइट्स किंग को, जो किंग हुआ करते थे यूरोप में, उनको वो फिर सोल्जर्स अता करते हैं। बट द मेन कंसंट्रेशन इन फ्यूडल सिस्टम इज बिटवीन फ्यूडल, द रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूडल लॉस एंड सर्विस, वो यहाँ नहीं है, बिकॉज पेजेंट्री जो टैक्स एक्सट्रैक्ट करती थी, मेन टैक्स अथॉरिटी वो सेंट्रल अथॉरिटी ही हुआ करती थी, ठीक। मॉडल अब हो गया डिवीजन। डिवीजन भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी आपको एक इम्पोर्टेंट चीज देखने को मिलेगी। डिवीजन में हम क्या क्या देखते हैं, सेंट्रल अथॉरिटी कौन सी थी, किंग, और किंग क्या, किंग एब्सोल्यूट मोनार्क का काम करता, मीन्स ही हैड अनलिमिटेड पावर, स्पेशली ड्यूरिंग द कृष्णदेवराया, जब उसने सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन ज्यादातर हुई किसके अंडर, कृष्णदेवराया के अंडर, तो उस वक्त किंग एब्सोल्यूट मोनार्क का रोल प्ले करता था, ठीक। And it was the king who looked after the civil administration, ठीक है, looked after civil administration, directed military officers, and acted as a final court of justice. यहाँ मैं इतना ही कहूँ, फाइनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मैंने कहा, तो थोड़ा बहुत हम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आगे पढ़े, ठीक है। अब आती है डिविजन्स की बात मेन, हाँ। ये एम्पायर हुआ करता था, एम्पायर को वेरियस प्रोविंसेस में, ठीक है, अगर हम ये मान के चलिए एम्पायर है और ये प्रोविंस, ये रहा एक प्रोविंस, इन प्रोविंसेस को क्या कहते थे, राजाज या नाडू, राज्याज, और इनको दूसरा नाम क्या था, राज्याज, ठीक है। और इन प्रोविंसेस को डिवाइड किया जाता था इनटू वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, हाँ, और जिनको बोलते थे
क्या बोलते थे, नाडूज और कोटम्स। ये मेहरबानी करके याद रखना, राज्यास, नाडू और कोटम्स। और फिर इनको वेरियस टाउन्स, उन टाउन्स को क्या बोलते थे, स्थलास। हाँ, और इन टाउन्स को फिर किस में, ग्रुप ऑफ विलेजेस में, किसमें, और फाइनली ग्रुप ऑफ विलेजेस को किस में, विलेज में, जिसको कहते थे ग्रामर। ठीक, और ये जो विलेज था ये हमें पढ़ना है। क्या था, क्योंकि हाँ ना, नाम नहीं था, विलेजेस। ठीक है, और ये सेल्फ सफिशिएंट विलेज था। ये यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, नाडू कहाँ होता था बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, चोलास में, और यहाँ कौन हुआ, सेल्फ सफिशिएंट विलेज, यह था बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए यहां आप अभी देखेंगे और एक टर्म जिसको बोलते थे आयागार। क्या कहते थे, आयागार। जो ऑटोनॉमी ऑफ विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन में देखते थे चोलास के वक्त, उतनी, और याद रखना ये स्टेटमेंट, ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, उतनी ऑटोनॉमी अब आप विजयनगर किंगडम में नहीं देखेंगे विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिवीजन नहीं है, विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, नहीं, हमने देखा कि डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ भी थी, मगर उतनी ऑटोनॉमी नहीं थी। ठीक है, और नई नई टर्म्स हमारे सामने आए, सच एज नायक्स, आयागारस, ये ज्यादातर प्रोमिनेंट हो गए रादर देन सबाज और नाडूज। ठीक है, ये जो सेल्फ सफिशिएंट विलेज था ना, दिस वाज मैनेज्ड बाय विलेज हेडमैन हु एक्टेड एज लोकल असेंबलीज। जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये किस, मैनेज्ड बाय विलेज असेंबलीज। ठीक, ये याद रखना, विलेज असेंबलीज थ्रू, जो भी मैं वर्ड यहां रखा हूं ना, वो याद रखना, थ्रू हेरिडिटरी ऑफिशियल्स, ये याद रखना। कभी कभार मैं फिर आप पढ़ के भी फिर आपको लगता है हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। थ्रू हेरिडिटरी पे अंडरलाइन करना, थ्रू हेरिडिटरी ऑफिशियल्स like village headman, accountant, etc. और इन ऑफिशियल्स को कलेक्टिवली क्या कहते थे, आयागार। क्या कहते थे, आयागार। ठीक है, अब इनको कैसे असाइन करते थे, ये ज्यादातर ग्रुप ऑफ फैमिलीज हुआ करते थे, हेरिडिटरी फैमिलीज हुआ करते थे, तो वही आयागार्स का काम करते थे। इनको भी they were given a plot of land, plot in a village, which was generally a tax free, और उस tax free land को कहते थे मनिया। क्या कहते थे, मनिया। मन, ये आपको पढ़ना है इकोनॉमी में, मनिया, टैक्स फ्री लैंड
Yeah, sometimes they had to pay as fixed portion of the rent. ठीक है? This was a very distinct feature of Vijaynagar Empire. मान्य क्या था? Tax free land. लेकिन जो दिया जाता था हाँ? आया था। जो आयागार्स को दिया जाता था. ठीक है? This since a distinguishing और यूनिक फीचर था विजयनगर एम्पायर का, तो हमें ये पढ़ना पड़ा. ठीक? हाँ? इसके बाद आपके पास एक इम्पोर्टेंट सवाल रहता है. ये भी हो गया अब डिवीजन का, आयागार्स भी हमने पढ़े. अब हम मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हमें अब पता है. ठीक है ना? डिवीजन भी हुआ. हाँ, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन आपने पढ़े आप. हाँ, ठीक. मिलिट्री चीफ्स नायक हुआ करते थे, बट दे वर डायरेक्टेड बाय किंग. हाँ, वो है. अब व्हाट अबाउट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दिस विल बी आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे. जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन. और यहाँ आप ध्यान दें. ठीक है? अगर हम सिस्टम ऑफ जस्टिस की बात करेंगे, नो रेगुलर सिस्टम ऑफ जस्टिस. मीन्स कोई लोअर कोर्ट नहीं, कोई मिडिल कोर्ट नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट. कौन इस्तेमाल, सुप्रीम अथॉरिटी कौन थी जुडिशियरी में? किंग. किंग यूज्ड टू एक्ट एज, किंग क्या काम करता था? किंग एक्टेड एज सुप्रीम कोर्ट. और अगर हम लोकल लेवल की बात करें, ग्रास रूट लेवल, वहां विलेज पंचायत एक्ट लोकल ट्रिब्यूनल. अगर हम ग्रास रूट लेवल पे बात करें ना, हम वहां लोकल पंचायत या विलेज पंचायत वो कर रहा था लोकल ट्रिब्यूनल का काम. ठीक है? टाउन लेवल की अगर हम बात करें, वहां जो लोकल गवर्नर हुआ करता था, ही एक्टेड एज मैजिस्ट्रेट एंड जज. वही एक्ट कर रहा था क्या? मैजिस्ट्रेट एंड पनिशमेंट्स किस लेवल की थी? पनिशमेंट सीवियर थी. सीवियर एंड बार्बरस. ठीक है? आया समझ? This is about the polity, governance and administrative structure of the Vijaynagar kingdom. Tomorrow we'll have a discussion about economy and society. But before I conclude, I would request you to please go through that economy and society portion such that we complete. वो आपके लिए important है वो question. ठीक है? हाँ? So this will be all for today. Thank you so much. Allah Hafiz.